Hello and welcome to Sameer's Jasuja-PropEquity channel, and I'm Rishali. Starting this week, we begin a weekly property news segment which will help you, the consumer, keep track of what's happening and help you make the most accurate decisions about your property needs. So let's get started with the big news of the day. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented Budget 2024 outlining 9 key priority areas: agriculture, employment, human development, energy security, manufacturing, innovation, and next generation reforms. A major highlight of the budget, and to address the urban housing crisis, investment under PM Awas Yojna Urban 2.0 has been significantly increased to 10 lakh crores. This substantial investment aims to meet the growing demand for urban housing and improve living conditions in cities. Central assistance of Rs 2.2 lakh crores for urban housing over the next 5 years, as well as an interest subsidy scheme to facilitate loans at affordable rates for urban housing. The Finance Minister also announced development of 10 new industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program. These parks are to be established in or near 100 cities and will feature complete infrastructure and plug-and-play facilities, enhancing the ease of doing business and promoting industrial growth. The budget also reaffirms a continued commitment to infrastructure development with the substantial allocation of Rs 11.1 lakh crore rupees. The capex target of FY25 remains unchanged from that announced in the interim budget in February. In a significant policy shift, the Union government is encouraging states to lower stamp duty on property purchases and to consider offering lower rates for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes, said Sitharaman. The high stamp duty rates have been flagged as a contributing factor to high home prices, low property ownership rates, and rampant black money dealings in the sector. Taxation changes were also announced, with the capital gains tax rate being increased from 10% to 12.5%. The taxation structure has been rationalized and simplified, with only 2 holding periods: 12 months for listed securities and 24 months for all other assets. The holding period for unlisted shares and immovable property remains at 24 months. Personal income tax slabs have also undergone a change. Regional development received a boost, with Andhra Pradesh set to receive 15,000 crore rupees for the development of the new capital, and Bihar allocated 26,000 crore rupees for the construction of new highways. These investments are expected to stimulate economic growth and improve infrastructure in these states. और बजट पे और प्रतिक्रिया जानने के लिए चलते हैं हमारे फाउंडर एंड सीईओ समीर जसूजा के पास और जानते हैं कि रियल एस्टेट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे। समीर, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज बहुत बड़ा दिन था, एक बजट प्रस्तुत किया गया है निर्मला सीतारमण जी से, और ये मोदी जी का 3.0 का सबसे पहला बजट है साल का। तो इस बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है for the government to try and achieve its goals, there are some very positive things that have been looked at, big areas that have been stressed on, which are the need for the country, like employment generation being one, the expenditure on infrastructure, the planned capex for India, that is going higher and higher, and that is a very good sign and the right signal that the government is sending to everybody else, that they will continue on the path of growth and focus on growth and focus on employment generation. But we have to still wait and watch how it pans out. There are certain negative points which are very minor, like increase in capital gains tax, which I would like to talk about more in detail. I think for a big reform budget, this is a step in the right direction, but major reforms are expected if we have to achieve and be the 4th largest economy in the world. So coming to major reforms, Sameer, you also put out a video very recently on what you think should be a radical change. What do you think you would have done differently if you were the finance minister and you had to present the budget today? See, first of all, मैं ये कहना चाहूँगा that I am a patriot. I am a student of geopolitics and economy, and I watch it very, very closely. I'm also a very big Mr. Modi fan. I think what he's done for the country in the last 10 years has been phenomenal. With respect to all the foreign direct reserves that have come into the country and have grown this way, the GDP growth on a year-on-year basis, and how he's positioned India on a global scale.
So I'm very proud of Mr. Modi, and I'm proud to be an Indian. However, if I was the finance minister and if I had big dreams like Mr. Modi and he wants to achieve them, I would like to be more radical. And what I mean by radical is that I have to look at various factors. The most important factor which the opposition is gunning for is employment generation. And employment generation in a big country like India of 140 crore people, where 40 crore plus people are still unemployed, you have to focus a lot more. And to focus a lot more, employment generation can maximum be created by creating more businesses, by creating more entrepreneurs, because they are the biggest employers in the country, whether it is the SME sector or the big corporate sector. And for that, the reforms that are required and the incentives that are required for an entrepreneur seem lacking in this budget. So if Prime Minister Modi has to go after creating huge amount of exponential employment generation that is required, one is that there has to be huge spends on the infrastructure, which he is doing. But with respect to employment generation, there have to be huge reforms in the private sector, which have to help out and aid in creating that employment generation, which I think I would do differently. I'd also like to make another point over here that the capital gains tax has been increased from 10 to 12.5%. Now, if we have a dream of becoming a developed country by 2047, the 1991 budget, for example, was the biggest budget for India, where serious amount of reform took place, serious amount of foreign direct investment was attracted by way of policies. Now that has to be looked at more seriously. If this country has to achieve its goal, we have to get a lot more foreign direct investment than already there is. And if we are going to start increasing capital gains tax, businesses are going to get a little worried. The foreign money will start getting worried, and they will restrict themselves from coming that much. Because if you see, Mrs. Sitaraman has said, okay, this budget is the master budget and there will be tweaks that will be done to that budget. So on that, if I look at the capital gains tax, there has been a tweak that has been done where 10% has gone to 12.5%. It worries foreign investors that 12.5 may become 15 one day and may become 20 the next year. So that is something that was not required according to me. We have to boost the stock markets, and if we have to boost the stock markets and attract more investments, we have to be far more tax friendly. The biggest example and case study that we should follow is that of Dubai or Singapore, where there is zero capital gains tax. And look at the kind of companies in such a small country that have got set up. They have literally become the financial hubs of the world today, right? We cannot compare ourselves to America or Europe because they've been developed economies for over 100 years. Correct. So we can't take those examples, and the per capita incomes of those nations are much, much higher for the last 50 years. Mm-hmm. Whereas if you look at Dubai or Singapore, they were nowhere on the global map from the 1960s. And look at where they are. They are the highest earners per capita GDP. They're such small countries and they've been able to grow so much, and their GDP is so much compared to their population by having very serious reforms with respect to attracting foreign direct investment and being very tax friendly. And that is something, and that is a message that we need to send across globally if we have those ambitions of becoming the third largest economy in the world, which we should. Considering the kind of population that we have and considering the kind of ambitious leader that we have, we can do it, but we need to be more radical in our reforms. Sameer, आप real estate sector से हैं and you've been an expert doing data analytics for so many years. आज के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने 10 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया है हाउसिंग के लिए. आप इसके बारे में बताइए, और विद रिस्पेक्ट टू द जनरल बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? So, since real estate is my subject, I would like to talk a little bit more about it. First, इस 10 लाख करोड़ के बारे में बात कर लेते हैं.
ये 10 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ने दिया है, ये पिछले 10 सालों में लगभग 8 लाख करोड़ था। सो उसको इंक्रीज किया, ये बहुत अच्छा है। इसमें सब्सिडीज दी जा रही हैं इन वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, बट यू हैव टू डिवाइड दिस 10 लाख करोड़ इनटू रूरल एंड अर्बन। अगर आप रूरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसमें सब्सिडीज हैं, 4% इंटरेस्ट की सब्सिडी है, 1.5 लाख पर घर की सब्सिडी है। ये सब बहुत अच्छा है रूरल एरियाज के लिए, बिकॉज रूरल एरियाज में रियल एस्टेट की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, लैंड लगभग फ्री होता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चाहिए होती है। सो वहाँ पे ये काफ़ी बेनिफिट करेगा। और अगर आप इसको अर्बन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1.5 लाख रुपए अर्बन सिटीज़ में, टीयर 1 सिटीज़ में अगर गवर्नमेंट को मदद करनी है तो ये बहुत कम है। ये उस तरीके से है जैसे कि ऊँट के मुंह में जीरा। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी 50-60 लाख से कम नहीं है, तो अगर आप 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट दे देंगे तो वो 2% भी जाके नहीं होता है। और अर्बन सिटीज जब तक नहीं ग्रो करेंगी इन अ रैपिड वे, मोर अर्बन सिटीज डोंट गेट क्रिएटेड, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डजंट गेट डन देयर, बिकॉज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अर्बन एरियाज में ही हो रही है, जो आपके टैक्सेस बेयर कर रही है, जो आपको फर्दर टैक्स इनकम्स दे रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे तो टैक्स है नहीं। सो सिर्फ टैक्सेशन मोस्टली जो आती है वो अर्बन एरिया से आती है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स बेनिफिट्स देने पड़ेंगे या ज़्यादा इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। जैसे कि एक आइडिया है, गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, अगर आपको ट्रूली सब्सिडाइज करना है तो आप लैंड गवर्नमेंट को, डेवलपर्स को फ्री पे दीजिए। जिस लैंड सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट होता है रियल एस्टेट डेवलपमेंट का। सो अगर आप उसको आप फ्री में दे पाएंगे तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, ज़्यादा घर बनेंगे, मिडिल क्लासेस को बेनिफिट होगा, आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, बिकॉज रियल एस्टेट इज एसोसिएटेड विद 270 मोर इंडस्ट्रीज एंड रियल एस्टेट इज गोइंग टू बी 14% ऑफ द GDP ऑफ द कंट्री। It is also going to be the largest employer in the country. So अगर आप रियल एस्टेट में radical reforms लेके आते हैं तो आप हर तरीके से इकोनॉमी को बेनिफिट करते हैं, आप 270 इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करते हैं, आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट कर पाते हैं, तो आपको थोड़ा रैडिकल होना होगा। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। आज पूरी दुनिया जानती है दैट वी आर अ IT सुपर पावर, राइट? What happened in the beginning of the IT? Government came up with income tax being zero. Government came up with SEZs, where if you set up an IT company in an SEZ, there was no tax for the next 10 years, and there were tax holidays that were given. There were serious radical reforms done for the IT sector, to boom, to bloom, and to become a multi-$100 billion industry, and where now the CEO of Google, the CEO of Microsoft are Indians. So we have that capability, to demonstrate to the world how big we can get if the government supports us, and we've demonstrated that. If real estate has to become a $1 trillion economy, that is Mr. Modi's dream, and we are currently at $250 billion, we are 1/4 that. We have to be very radically different than what we are demonstrating in this budget today. Yes, there is one very big positive factor that 11.1 lakh crores has been dedicated for infrastructure, and that directly is a correlation to the real estate growth. So that is a very good step, and that should continue. But there are other big things that we need to do, and like I said earlier, that you have to look at Dubai's example, you have to look at Singapore's example. वहाँ पे रियल एस्टेट 1970s में कौड़ियों के दाम पे बिकती थी। आज they have become the most expensive cities in the world, and there is more and more capital coming into real estate, even though it's one of the most expensive cities in the world. Why? Because they have friendly tax regimes. If you have to make that happen, you have to look at not increasing capital gains tax. Now अगर आप real estate compared to stock markets भी ले लें, जो अब 10 से 12.5% हुआ है, रियल एस्टेट पे तो अभी भी 20% है। सो अभी भी आपने उसको इक्वल नहीं किया है। सो रियल एस्टेट तो जीरो होना चाहिए। सेकेंडली, आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू ऑन रेंटल हाउसिंग, इनकम जनरेटेड फ्रॉम रेंट। अगर आप देखिए कि आप पूरा टैक्स भर के एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो प्रॉपर्टी आप रेंट पे देते हैं, और इंडिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं एग्जिस्ट करता, तो बहुत सारे लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद के रेंटल इनकम चाहते हैं ताकि उनकी थोड़ी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करे और उनको रेगुलर इनकम आए। आप उसको भी टैक्स कर देते हैं, राइट? अगर आप उसको टैक्स ना करें
तो लोग और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे रियल एस्टेट में, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो ज्यादा घर बनेंगे, ज्यादा घर बनेंगे तो उन 275 इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा, उसके थ्रू आपको ज्यादा जीएसटी मिलेगा, स्टैंप ड्यूटी आपको ज्यादा मिलेगी, तो नेट आप शायद पॉजिटिव हो जाएंगे कि जो आपको टैक्स मिलता है वो 10 तरीके से और आपको ज्यादा टैक्स मिल जाएगा। और हम सबको पता है आज की डेट में कि जीएसटी इज द बिगेस्ट टैक्स अर्नर फॉर द कंट्री। आज जीएसटी जाके 15 लाख करोड़ रुपए साल का हो चुका है, जो कि ओवरऑल आई थिंक 60 to 70% ऑफ द ओवरऑल टैक्स कलेक्शन ऑफ इंडिया है। तो आप अगर 10% लूज करने के लिए अगर आप कहीं और से 25% कमा सकते हैं, वो स्टडी करना बहुत जरूरी है, वो रिसर्च करना बहुत जरूरी है, बिकॉज रियल एस्टेट ही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड है, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट करता है। तो अगर मोदी जी का ड्रीम है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, रियल एस्टेट के बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। आप खुद प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आप 14% जीडीपी का रियल एस्टेट से कमाना चाहते हैं, और रियल एस्टेट में आप ज्यादा कुछ रिफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं। सो वो करने के लिए अगर आपका गोल वो है तो आपको रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आपका गोल छोटा है तो आपका ये बजट चलता है। So, Samir, in fact, you're saying they put more money back into the purse of the consumer, so they spend more, and then that's how the economy in general will grow. One last question I wanted to ask you was the allocation that has been given to Andhra Pradesh for the new capital and Bihar. Again, infrastructure के point of view से देखें तो highways बनने के लिए 26,000 करोड़ की बात चल रही है। तो इनका रियल एस्टेट पे इन एरियाज में कुछ आपको सिग्निफिकेंट लगता है कि होगा ग्रोथ? हाँ, मुझे लगता है कि ये भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम सबको पता है एक तो बिहार की जो स्टेट है वो इंडिया की सबसे पिछड़ी हुई स्टेट है। सो अगर आप उसको डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल सही स्टेप है। हम सबको पता है कि बिहार के लोग पूरी इंडिया में जाके काम करते हैं और लेबर के रूप में काम करते हैं। अगर आप वहाँ पे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो लोगों को अपना घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, वो बेटर होगा उस स्टेट के लिए। आंध्र प्रदेश पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश एक सेपरेट स्टेट बन गया और तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट बन गया। अब आंध्र प्रदेश हिस्टोरिकली इंडिया की 200-300 साल पुरानी स्टेट है, जब वो रियासत होती थी, बट अब आपने एक नया कैपिटल वहां बना दिया है। बट आपको उस कैपिटल को इक्विवेलेंट करने के लिए हैदराबाद की तरह आपको उस पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव लीडर हैं, और उन्होंने दिखाया है आईटी बूम हैदराबाद में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी वहां पे। तो अगर उनका एम्बिशन है कि वो एक और हैदराबाद बना दें अपने नए कैपिटल को, तो इंडिया उसके लिए कुछ बेटर हो ही नहीं सकता। तो आपको ये देखना पड़ेगा फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई नो द ऑपोजिशन वुड बी लुकिंग एट इट फ्रॉम अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दे विल थिंक कि ये लीडर्स है उसको सपोर्ट कर रहे हैं करंट गवर्नमेंट को, तो इसलिए उनको ज्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। बट हिमाचल प्रदेश को भी तो दिया गया है इस बजट में। सो अगर आप पिछड़े हुए एरियाज को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो, या एक नया कैपिटल बन सके जो एक टियर 1 सिटी की तरह बन सके, और वहां पे जो लीडर है वो बहुत विजनरी लीडर हैं और उन्हें दिखाया है, सो क्यों नहीं उस कैपिटल को भी एक टियर 1 सिटी बनना बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट सवाल ये है कि पिछले 5 साल कोविड के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा बूम दिखाई दिया है। नाउ Modi ji has come back to power, 3.0 government. What is it that you foresee for the next 5 years in the real estate sector? So I am very positive because of one reason alone, which is the government spending on infrastructure, and the government is increasing its budget towards that. And not only is it increasing its budget, it is making sure that it spends that budget. So creating more highways, more roadways, creating connectivity through more airports, or creating railway infrastructure, all these areas of investment benefit the real estate sector in a big way, and it has been demonstrated. As I mentioned earlier, Atal Setu is a big example of that. It's opened up Navi Mumbai completely. What used to be 1/4 the size of Thane, आने वाले टाइम में आप देखेंगे it will start equaling Thane and getting better than Thane, just because a bridge got built that created that connectivity, and from 1.5 hours it now takes 20 minutes to reach there, and Mumbai badly needed that.
समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई थिंक फ्रॉम योर साइड एंड अस, आई थिंक द लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू से एंड थैंक द गवर्नमेंट इन पावर राइट नाउ फॉर द बजट दैट I'm very happy that BJP is back in power. It can continue the reforms it has been continuing, leading India to growth. But sir, my request once again would be that you have big ambitions. For big ambitions, big things need to be done. And please do something for the entrepreneurs of this country, because we cannot only do for the poor. Remember, the poor get employed by the entrepreneurs. So if you do something for the entrepreneurs, you incentivize them more, you will get more employment, and that is your biggest focus area. So I'm trying to give some advice that if you want the employment generation in this country, then entrepreneurs need to be supported in a much bigger way so that they can provide those jobs that are badly needed to the people who are seeking it. थैंक यू वंस अगेन. एंड ये है मैसेज इंडस्ट्री से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे ऑन समीर जसूजा प्रॉप इक्विटी चैनल. वी विल बी बैक अगेन नेक्स्ट वीक विद अनदर पाथ ब्रेकिंग वीडियो. टिल देन, स्टे ट्यून्ड.